Hello dear students, welcome to Clarity for SEO. Today in this series, we will try to cover the important MCQs that can be framed from the newspaper. Alright, and newspaper, the articles that were picked for today MCQs and descriptive series belongs to 15th and 16th of Feb. Okay, so we will discuss few MCQs, and after those MCQs, I will give you 4 descriptive self-practice questions, okay, that you need to practice by yourself. And if you want to get your answers evaluated by our mentors, then you can telegram us your answer in the link given in the description section. All right, so let's try to see some of the important MCQs. And few MCQs are even been taken from UPSC. So you need to understand those MCQs and the relevance of those MCQs, right? So the first question with respect to today's series is question 1. You can read out with me. Banks increases certificate of deposit issuance. This was the article actually with respect to CDs, right? Certificate of deposit. The bank increases certificate of deposit issuance sharply as deposit growth lags credit growth. So deposit growth is lagging behind the credit growth. Therefore, bank is issuing what? Certificate of deposit. Simultaneously, RBI injects liquidity via open market operation. पता ही है RBI का liquidity tool है, right? Open market operation से it can buy or sell the government securities. Now, certificate of deposit yields, that is interest, soften but volumes remain the high. With which interference is most appropriate? With respect to this statement, this question is asking that which of the following interference is most appropriate for this? All right, let's see the statement 1, the option 1. Structural liquidity surplus has eliminated the funding stress. No, incorrect statement. Liability management preferences outweighs marginal liquidity easing. Credit demand has collapsed. No, credit demand has not collapsed. Credit growth you can see here. RBI has monetized the fiscal deficit. No. So the correct option here, it is liquidity management preference. Okay. And this is being preferred outweighing the marginal liquidity easing. So here liquidity management is being preferred. This is the interference that we can take out from this following statement. All right. Now, next question. Which of the following, this question was asked in UPSC in 2020 as well, UPSC prelims 2020. Okay. So the first statement, you need to read out these statements, the following 4 statements, and then you have to mark out the correct statement. All right. So the first statement, commercial paper is short-term unsecured promissory note. Is it correct? Yes, it is true. Certificate of deposit is long-term instrument issued by RBI to a corporation. No, it is not a long-term instrument. All right, it is a short-term instrument, and it is not issued by RBI. Rather, it is issued by bank and financial institutions. Then, third statement: call money is short-term finance used for interbank transaction. Yes, in order to meet the liquidity crunch, in order to meet the liquidity need, right? Then fourth statement, zero coupon bonds are interest bearing short-term bonds issued by scheduled commercial banks to corporation. No, this statement is also incorrect. Therefore, by this we can eliminate statement 2 and 4. So the correct answer here is option 3, that is 1 and 3 only. You can also see the explanation over here. Regarding the commercial paper, it's a short-term unsecured P note, promissory note, सबको पता है P note. All right, issued by corporations. Issued by whom? Corporations. However, certificate of deposits, these are also short-term negotiable instrument, but they are issued by banks and financial institutions, not by corporations. All right. This is interest-bearing and offered to investors, including corporation. And commercial papers typically have the maturity period of 7 days to 1 year. That you need to remember with respect to CP. That is commercial papers issued by corporations to meet the short-term funding requirement of that particular corporation. Okay. However, call money में क्या होता है भाई?
refers to short-term borrowing and lending between the banks to meet the financial crisis, liquidity crisis. Okay. एंड जीरो कूपन बॉन्ड पता है सब लोगों को डिस्काउंट प्राइस में आता है ये. सपोज द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉन्ड इज 100 रुपीज, तो जीरो कूपन को बॉन्ड डिस्काउंटेड प्राइस 80 रुपीज में आएगा. ये जो डिफरेंस है जो मेच्योरिटी के बाद आपको मिल रहा है, दिस 20 रुपीज इज द प्रॉफिट एक्चुअली. वही आपको इट बियर्स नो इंटरेस्ट एंड आर रिडीम्ड एट फेस वैल्यू. रिडीम कितना में होगा? 100 रुपीज में रिडीम होगा. आपने 80 रुपीज में खरीदा बट रिडीम हो रहा है 100 रुपीज में. जीरो कूपन बॉन्ड, they are not a short term interest bearing bonds issued by commercial. They are not the short term interest bearing, जो कि यहाँ पे स्टेटमेंट में था that they are short term bonds issued by CB, SCBs, right? Now coming to the question number 3 here. With reference to instrument of organized money market in our country, in India, consider the following statement with respect to money market. First statement, treasury bill of 14-day maturity are still issued by government of India. No, it got discontinued. Now 14 days ka maturity ka treasury bill is not being issued. Okay. Certificate of deposit are tradable instruments issued by commercial banks. अभी हमने देखा. No. Commercial papers can be issued only by listed companies with minimum working capital of 3 crore. Yes, this is issued. यहाँ पे जो only का statement है ना, that makes this statement actually very extreme statement. Therefore, it is incorrect. Okay, only नहीं होगा यहाँ पे. और commercial paper can issued only by listed companies. Yes, it is true here. Only यहाँ पे सही है. With minimum working capital of 3 crore. Statement 3 is correct, perfectly correct. 1 and 2 statement is incorrect, so option C is correct here. All right, you can also see, read the explanation over here. 14-day treasury bill, both intermediate and auctionable, are discontinued in 2001 only. Currently we have 91 days, 182 days and 364-day treasury bills. ये सब बहुत secured bills होते हैं, treasury bill issued by central as well as state governments. However, with respect to certificate of deposits, were initially issued only by banks. Since 1993, certain financial institutions also issuing this certificate of deposits. Okay, for a period above 1 year. All right. However, commercial paper issued for the period of 7 days to 1 year. Okay, and those listed companies can only issue whose working capital is above 3 crore. All right. So statement 3 is correct here. ठीक है, समझ में आ रहा है? Now coming to the question number 4 here. Which the following statement is correct about the commercial paper is most accurate? With respect to commercial paper, you need to find out that which the statement is most accurate. Okay, it is secured instrument issued by corporations with the maturity up to 3 years. नहीं कह सकते हैं. You have to find out most accurate ना. नहीं. It is a unsecured short-term money market instrument issued at discount, typically not exceeding 270 days. Typically not exceeding. It must be registered with SEBI, Security and Exchange Commission. No. It can be freely used to finance fixed assets such as plant and machinery without regulatory involvement. Without regulatory involvement कैसे हो सकता है? Okay, no, it is primarily issued by banks to mobilize retail. Primarily issued by banks. No. तो यहाँ पे most accurate जो हो सकता है ये हो सकता है unsecured short-term money market instrument issued at discount price, typically not exceeding, ठीक है, 270 days. तो by this most accurate जो है statement इस question के लिए option B would be correct. Now question number 5, which of the following combinations regarding certificate of deposit in India is correct? Issued by RRBs, maturity 1 to 5 days, not at all. Issued by NBFCs, maturity 7 to 90 days, no. Issued by scheduled commercial banks, excluding RRBs, maturity 7 to 1 years, yes. Excluding RRBs. RRBs are not going to issue certificate of deposits in India. ठीक है?
Question number 6. Which of the following best differentiates certificate of deposit from commercial paper? I have taken lots of questions from certificate of deposit and commercial paper because students used to get confused of these things, right? Therefore, I have framed the MCQs with respect to this, and it appeared in the newspaper as well, right? You can find the article, the original article, in the Telegram group. This Telegram group, you can follow it in order to get the current affairs update with respect to your RBI as well as other regulatory examination. Okay. So, best differentiate between certificate of deposit and commercial paper. The CDs are unsecured while commercial papers are secured. No. CDs are negotiable instrument issued against bank deposit, while CPs, commercial paper, are unsecured promissory note issued by corporates. Yes, this option is correct. Okay, तो आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है. Statement 7. Which of the following statement about the non-convertible debentures? जो डिवेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल, इज करेक्ट. दे आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स एट मैच्योरिटी. No. They must necessarily be unsecured instruments. No. They are short-term money market instruments. Nahi, not at all. They are fixed income instruments used to raise long-term funds, may be secured or unsecured. Yes, इसको कहते हैं non-convertible. They can be treated as fixed income instruments used for long-time funding. Okay, option D is correct for with respect to statement question 7. Question 8. Which the following statement is most appropriate? You have to read the following statements and you need to find out that which is the following is most appropriate. ये systematic investment plan से related है. All right. High net worth individual classification से related है. So let's try to read out the statements. A systematic investment plan guarantees fixed return similar to recurring deposit. ऐसा नहीं होता है इसमें. Fixed return नहीं. Recurring deposit की तरह behave नहीं करता है. SIP investment are risk free. No, it's not risk free. And H and WI classification is based primarily on annual income rather than investable assets. No, not correct. Okay. SIP is discipline mode of investing in mutual funds. यहां तक सही है. डिसिप्लिन मोड रेगुलर है, इन्वेस्टमेंट है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, where returns are subject to market risk. Yes, both the statement is correct with respect to option number D. So D is the correct statement, correct option. Okay, now question number 9. India's export share stagnates at 1.8% of global trade despite the multiple FTAs. We are seeing multiple foreign trade free trade agreements is being signed by India with various countries. All right. So despite this, India's export share, it got stagnant at 1.8%. Which structural issue is implied? It implies which type of structural bottleneck or structural issue you can say, right? Excessive import compression? No. Weak supply side competitiveness? Yes, this is the correct option. Weak supply side जो है ना, competitiveness जो वहां पे competitiveness है, that is actually weak. Supply side constraint is there. Okay, तो option B is correct. Monetary over tightening ये नहीं है. Overvalued exchange rate? No. Declining labor participation? No. This is the true reason that India's export share is getting stagnant despite India signing multiple free trade agreements. Question number 10. Suppose the government increases fiscal deficit significantly through higher. देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो होता है ना, इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट हो जाते हैं. ये स्टेटमेंट उसने न्यूज़पेपर से ले लिया और फिर आपका जो स्टैटिक सिलेबस का कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे ऑप्शंस फ्रेम कर दिए. ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग अप्लाइड क्वेश्चंस बोलते हैं. अप्लाइड 2-3 कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ के अप्लाई करके क्वेश्चन पूछ दिया. ऑलराइट, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं इस पे. Now, coming to question number 10. Suppose the government increases fiscal deficit significantly through higher revenue expenditure. Statement कि fiscal deficit को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा गवर्नमेंट through higher revenue expenditure करके, while the output gap is already closed.
आरबीआई मेंटेन्स एन एकोमोडेटिव स्टांसेस, पता है आपको एकोमोडेटिव स्टांस आरबीआई मेंटेन कर रहा है। ओके, नॉर्मल से शिफ्ट हो गया, न्यूट्रल स्टैंड से शिफ्ट हो गया एकोमोडेटिव स्टैंस। विच आउटकम इज मोस्ट लाइकली टू हैपन, राइट? इस समय क्या आउटकम हो सकता है? फर्स्ट, डिक्लाइन इन बॉन्ड यील्ड्स ड्यू टू सरप्लस लिक्विडिटी, नो। एप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इमीडिएट इंप्रूवमेंट ऑफ प्राइमरी बैलेंस, इमीडिएट इंप्रूवमेंट तो नहीं होने वाला है भाई। डिमांड पुल इन्फ्लेशंस reinforced by accommodative monetary conditions, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकता है बिकॉज आर गवर्नमेंट इज आल्सो इंक्रीजिंग द फिस्कल डेफिसिट थ्रू हायर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ सकता है, और लिक्विडिटी बढ़ने की वजह से मार्केट में लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा तो इट विल लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन टाइप सिचुएशन। पता है इन्फ्लेशन दो तरह का होता है, डिमांड पुल और एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। कॉस्ट पुश जहां पे कॉस्ट जो है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ता है तो प्राइस राइज होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे लेबर का, टेक्नोलॉजी का, कैपिटल का, ठीक है, मैनेजमेंट का, ये सब कॉस्ट अगर बढ़ता है, रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट बढ़ता है तो फिर प्राइस राइज होता है। और डिमांड प्लस इन्फ्लेशन ऐसा टाइम होता है जब लोगों का डिमांड बढ़ता है। डिमांड कब बढ़ेगा? जब लोगों का पैसा रहेगा, तो उसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके, coming to next question, if persistent high fiscal deficit leads to rising government borrowing and RBI is compelled to maintain low interest rate to keep its debt servicing sustainable, this situation reflects to what? Persistent high fiscal deficit है, which is leading to rising government's borrowing. Okay, and RBI is compelled to maintain the low interest rate. तो ऐसा सिचुएशन को क्या कहेंगे हम लोग? पहला, लिक्विडिटी ट्रैप, नो। रिकार्डियन इक्विवेलेंस, नो। फिस्कल डोमिनेंस ओवर मॉनेटरी पॉलिसी, यस, कह सकते हैं कि फिस्कल पॉलिसी जो है वो डोमिनेट कर रहा है मॉनेटरी पॉलिसी से, जो कि आरबीआई फ्रेम करता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। फिस्कल डोमिनेंस ओवर मॉनेटरी पॉलिसी। क्राउडिंग इन इफेक्ट इसको नहीं कहते हैं, और न्यूट्रल मनी ट्रांसमिशन भी नहीं। क्राउडिंग इन इफेक्ट ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, the government reduces revenue deficit but increases capital expenditure while maintaining overall fiscal consolidation. If capital expenditure, that is capex, raises supply capacity over the time, the likely medium term macro effect would be what? अगर ये रेज कर देता है सप्लाई कैपेसिटी ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम, तो मीडियम टर्म में क्या किस तरह का मैक्रो इफेक्ट हो सकता है? ओके, at the same time government is reducing the fiscal revenue deficit and increasing capital expenditure. Okay, तो आपको इन सब वर्ड्स को समझने के लिए you have to go through the budget very thoroughly. वहां पे जो है ना सेकंड चैप्टर से आप देखोगे रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, इसका सारा कॉन्सेप्ट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। तो बजट को इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर रेगुलेटरी एग्जामिनेशन। नाउ ऑप्शन ए, स्ट्रक्चरल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, नो, इनकरेक्ट। रिडक्शन इन इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स थ्रू सप्लाई साइड एक्सपेंशन, यस, दिस ऑप्शन वुड बी करेक्ट। रिडक्शन ऑफ inflationary pressure through supply side expansion. Statement question number 13, high fiscal deficit financed through market borrowing may raise the government bond yields. If RBI does not intervene, which macro mechanism operates in this condition? High fiscal deficit financed through market borrowing, fiscal deficit बहुत high है FD, अब market borrowing हो रहा है, market borrowing, it may raise to bond yields. ओके, इफ आरबीआई, अगर आरबीआई इस टाइम पे नहीं इंटरवेन करेगा, विच मैक्रो मैकेनिज्म वुड ऑपरेट, राइट। ऑप्शन 1, ऑटोमेटिक फिस्कल स्टिमुलस थ्रू मल्टीप्लायर, नो। एक्सचेंज रेट पेग स्टेबलाइजेशन, नो। डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन ड्यू टू मनी कॉन्ट्रैक्शन, यस, दिस विल हैपन, डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन ड्यू टू मनी कॉन्ट्रैक्शन, ओके। डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन ड्यू टू मनी कॉन्ट्रैक्शन, नो नो, इन्फ्लेशन डिक्लाइन नहीं करेगा बिकॉज फिस्कल डेफिसिट इज हाई ना, एंड मार्केट बोरोइंग इज आल्सो देयर, नो। ऑप्शन सी इज आल्सो इनकरेक्ट। डिक्रीज इन सीनियरेज रेवेन्यू, सीनियरेज तो अलग ही है भाई, इसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही मैच नहीं कर रहा। एंड क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बाय हाई इंटरेस्ट रेट, ये होगा।
कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आएगा वाया हाई इंटरेस्ट रेट हाई के साथ. ओके, तो ये सिचुएशन क्रिएट होगा. ऑप्शन ई वुड बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 13. ऑलराइट, अगर आरबीआई इंटरवीन नहीं करेगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का क्राउडिंग ऑफ बहुत ज्यादा होने लगेगा और ऑब्वियसली दे विल चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट, है ना. Now, question number 14, the last question of today's MCQ series. If market perceive the fiscal deficit is unsustainable and debt to GDP is rising without credible consolidation, which channel most directly raises the inflation expectations? You need to find out that which channel can most likely to raise the inflation expectation. Higher GST buoyancy? No. Rising term premium and currency depreciation risk. This can raise the inflation expectations. Okay. When the market is perceiving that fiscal deficit is unsustainable and debt to GDP ratio is rising. Okay. उस टाइम में term premium raise करना and currency depreciation risk we can see into the market. Right. And these things actually lead to inflationary pressure. Inflation में क्या होता है? करेंसी का वैल्यू ही तो कम होता है. The value of rupee actually depreciate. इसलिए वो सामान जो है, प्रोडक्ट जो है, it seems costlier. Actually the price of the value of currency depreciates in inflation. Price rise नहीं होता है. Rather currency value got depreciated during inflation. Inflation का यही मतलब. Okay. Now, few descriptive questions. First question, explain the relationship between fiscal deficit, primary deficit and debt to GDP ratio. जो कर्ज है भारत के ऊपर उससे जीडीपी का रेशियो, उसका रिलेशनशिप आपने फाइंड करना है. How does growth rate influence the debt sustainability? Okay, so it can be asked as a 10 marker question. तो आपको इक्वल वेटेज देना है कि यहाँ पर 2 मार्क 6 मार्क्स फर्स्ट पार्ट के लिए, देन 4 मार्क्स सेकेंड पार्ट के लिए. हाउ डज ग्रोथ रेट इन्फ्लुएंस द डेट सस्टेनेबिलिटी? ओके, 4 मार्क्स. तो अकॉर्डिंगली आपको इसको लिखना है, प्रैक्टिस करना है इन 400 वर्ड्स. इफ यू वोंट मैनेज टू राइट 400 वर्ड, देन एटलीस्ट ट्राई टू राइट 300 वर्ड्स. ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 2, critically analyze the implications of rising interest payment as a share of revenue receipts on fiscal flexibility and capital formation. Okay, again a 10 mark question. You have to analyze the implications of rising interest payments. Okay, जो इंडिया जो इंटरेस्ट पेमेंट कर, अभी इस बार आपने बजट में देखा होगा कि बजट में नियरली 20% ऑफ मनी आउटफ्लोज गोस टू इंटरेस्ट पेमेंट ओनली, इंटरेस्ट ओवर द बोरिंग दैट इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन अप. राइट, तो 20% ऑफ टोटल मनी, मतलब 100 रुपए में 20 रुपए जो है सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में ही जा रहा है. तो इट इज ए ह्यूज कंसर्न एक्चुअली विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी. तो ये आपको लिखना है, एनालाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट पेमेंट एज अ शेयर ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑन फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी एंड कैपिटल फॉर्मेशन. ओके. क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्राउडिंग आउट. क्राउडिंग आउट का कॉन्सेप्ट क्लास में टाइम एंड अगेन इट यूज्ड टू बी टेकन अप इन द क्लासेस ऑफ आवर आरबीआई क्लासेस. अंडर व्हाट कंडीशन कैन क्राउडिंग आउट बी मिटिगेटेड? कैसे इसको कम किया जा सकता है इन इंडियन इकोनॉमी. फोर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी ऑफ डेफिसिट? क्या इसका मतलब होता है? एनालाइज द मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके, ये भी एक 10 मार्क का पोटेंशियल क्वेश्चन. तो बाय दिस एटलीस्ट ट्राई टू राइट 2 क्वेश्चंस. अगर आप चारों नहीं अटेम्प्ट कर पाते हो, इफ यू आर मैनेज टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन देन वेल एंड गुड, नहीं तो 4 क्वेश्चन कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात. जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. Okay, bye bye, take care, see you soon in the next session.